very good morning, my dear students, and welcome you all to 1000 MCQs series 3 part 3rd. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MCQ नंबर 251 से. So 251 हमारा फर्स्ट MCQ है. An affidavit signifies, affidavit क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हम कह रहे हैं वो सच है, राइट? किसी भी तरीके की जो भी हम गारंटी देना चाहते हैं तो वो हम एक लीगल डॉक्यूमेंट पे देते हैं जिसको एफिडेविट कहा जाता है. Signed document where a person makes a sworn statement regarding his or her antecedents. Antecedents होते हैं previous life, मतलब कोई भी आपकी लाइफ का कोई ऐसा इवेंट, उन्हें कहा जाता है एंटीसीडेंट. जो आपकी लाइफ में पीछे कोई भी घटनाएं घटी हैं जिसमें मतलब आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, राइट? देन व्हाट इज एन आइडियोलॉजिकल वन पार्टी सिस्टम? Party based on suppression of other parties, parties based on corrosion, parties based on ideological reason, suppression of other parties, and based on communist ideology. So best suitable is party based on ideological reasons of suppression of other parties. Name the oldest political party in India, that is Indian National Congress. Indian National Congress जो है आपकी old party है. Then yes, one of the demerits of multi-party is that it often appears very messy and leads to political instability. That is right. Bahujan Samaj Party was founded by Kanchiram in 1984. That is also true. UK and US have two-party system. Yes, that's true. Democrats है, Republics है, और आपकी लेबर पार्टी है जिसको पहले लिबरल्स पार्टी भी कहा जाता था, जैसे कि यूके में है. Then economic growth of the country at the global level depends on which of the following. यहाँ पे economic growth of the country पूछा गया है at global level, तो हमें global level के perspective से देखना है. Otherwise points सारे ही justified है. Size of population भी matter करता है, territory of area भी matter करती है, global scenario भी matter करता है, लेकिन क्योंकि global level की बात की जा रही है तो कोऑपरेशन अमंग वेरियस नेशन, जितना ज़्यादा आपका कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में या दूसरी कंट्रीज़ के साथ में भी, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करोगे, बिकॉज मोर अदर कंट्रीज विल बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री, राइट? देन नेक्स्ट इज सोशल आउटकम कवर्स द एरिया लाइक dignity and freedom of citizen, gender equality, untouchability and discrimination, ban on child labor. So dignity and freedom, untouchability, ban. So 2, 1 and 4 जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी कोड दिया हुआ है. बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम. हमने नेशनलिज्म चैप्टर्स पढ़े हैं ना, तो क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करके? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी. Then if the government provides its citizen a right and means to examine the process of decision, it is an accountable government. जिस सरकार की जवाबदेही होती है, जो ये जवाब दे रही है कि किस लिए ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं, उन्हें हम अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कहते हैं. What do democracies ensure regarding decision making? It ensures the process of transparency. Which of the following is not true about democracy? It always worries about political majorities and public opinion. Is not true. So decision making is faster and quicker. Rather, this will be the right answer, क्योंकि democracy is known for delayed decision, not faster decisions, right? Why is democracy considered as better form of government than dictatorship? It promotes equality and enhances dignity of the individual. Yes, that would be the most appropriate answer. It promotes equality and enhances the dignity of an individual. Growth and development of the country in the way of providing better facilities and services to the individual signifies economic development. Growth and development of country, लोगों को better facilities provide करते हुए क्या signify करती है? ये signify करती है economic development of the country. Denial of opportunities to lead a long, healthy, creative life and to enjoy a decent standard of living is related to poverty. Definitely,
decision taken through the correct procedure by involving people is known as transparency. That's right. Democratic government is an accountable government. Of course it is. Democracies have successfully eliminated conflicts amongst the people. Democracies, अब आप इसको फर्स्ट इंस्टेंस में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यस, डेमोक्रेसी हैज एलिमिनेटेड द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल. बेल्जियम और श्रीलंका का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कि डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी बेल्जियम में ही नहीं, श्रीलंका में भी तो थी. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे कॉन्फ्लिक्ट्स को. देयर आर चांसेस दैट इन स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स अकर करेंगे. राइट. आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर में हमने पढ़ा है ना कि इट डज नॉट गारंटी, सो इट इज ट्रू. Democracy, sorry, it is false. Democracies have not successfully eliminated. Complete elimination of conflict तो possible ही नहीं है ना. तो डेमोक्रेसी जो है सिर्फ एक मीडियम है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, लेकिन कंप्लीट एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है. सो इट इज फॉल्स. द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट have gained in strength due to democracy. Yes, of course, because they have been given their due share. इनको reservation के through इनका share जो है वो दिया गया है representation का. Column A and column B. Democratic government is idea of political inequality improves the quality. Democratic government is a legitimate government. Okay. Democracy is attentive to the needs of all citizens. Democracies have successfully eliminated idea of political inequality. Democracy is considered better because it improves the quality of decision making. So A is 4, no, A is 3, B is 4, C is 1 and D is 2. Right. Alright. Political outcomes signifies accountable and responsible government, military rule, legitimate government, restricted popular participation. Political outcome signifies accountable and responsible government, yes. Military rule, no. Legitimate government, yes. Restricted popular participation, no. So answer has to be 1 and 3. 1 and 3. Right. Question number 272, dash government that takes decision by following norms and proper procedure is called transparent government. Right. Democratic government is an accountable government, a legitimate government, a responsive government, all the above. All the above. Government ruled by monarch or king is obviously monarchy, and privileges and rights to be valuable and important for functioning of democratic society is called civil liberties. कुछ हमारी by being virtue of civilians, of being citizens of a country, हमारी कुछ basic rights है, basic requirements है जिन्हें civil liberties कहा जाता है. Is it clear? With this we end series 3 part 3 and now we will meet in series 3 part 4. Very good morning my dear students and welcome you all to MCQs series 3 part 4. Let us continue further with question number 276. Political outcome signifies military rule. No, political outcome does not signify military rule. Development of a country can generally be determined by its per capita income. Economics शुरू हो गया है. Development of a country कैसे डिटर्मिन की जाती है? पर कैपिटा इनकम के थ्रू. और बहुत सारे क्राइटेरियाज है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो इनकम का क्राइटेरिया है और इसमें हम पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट लेते हैं. डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल शुड बी अचीव्ड. इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस्ड हियर. सो इट इज अबाउट national development. क्या है? Different person could have different as well as conflicting notions of country's development. A fair and just path should be achieved.
क्लियर? सो इट इज फॉर द सेक ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट रहेगी या कल्चरल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये पार्शियल डेवलपमेंट कहलाएंगी. इसलिए कंप्लीट डेवलपमेंट तभी होती है जब आपकी नेशनल डेवलपमेंट होती है, राइट? देन countries with higher income than others with less income are called more developed. Yes, total income of the country divided by its population is known as per capita income. That is right. Dash is a comprehensive term which includes increase in real per capita income, improvement in living standard of people, reduction in poverty, illiteracy, crime rate, etc. उसको क्या कहते हैं? उस स्टेज को कहा जाता है डेवलपमेंट. जब आपकी कंट्री ग्रो कर रही है तो ये सारी चीज़ें या तो बढ़ेगी और जो नेगेटिविटीज़ है वो घटेगी, उसे कहते हैं डेवलपमेंट. proportion of literate population in the 7 and above age group is known as literacy rate of the country. literate किसे कहा जाता है? a person who is 7 years of age and is able to read and write any one particular language, उसे literate कहा जाता है. तो proportion of literate population in 7 and above age, that means 7 या 7 साल से ऊपर, उसे कहा जाता है literacy rate, और उन लोगों को कहा जाता है literates. Then which age group of children is included for calculating net attendance ratio? Net attendance ratio सिर्फ 14 और 15 के age group की ली जाती है. For calculating body mass index BMI, weight of the person is divided by, हमने पहले किया था ना ये BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं. बॉडी का जो है उसका जो भी बच्चा है उसका वेट लिया जाएगा, वेट ऑफ द पर्सन, which is to be divided by, हम किससे डिवाइड करेंगे उसको? स्क्वायर ऑफ द हाइट से, स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स. इज इट क्लियर? सो दिस विल बी, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. सो इट इज स्क्वायर ऑफ द हाइट. डैश इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव. कितने साल आप जी पाओगे उसे क्या कहते हैं? इन जनरल भी उसे क्या कहते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. जब हम नंबर ऑफ ईयर्स न्यू बॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज बिलीव्ड टू लिव इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जनरल. Then the development that should take place without damaging the environment and development in present should not compromise with the needs of the future generation is known as sustainable economic development, right? Dash means sustained increase in real per capita income that promotes economic welfare by reducing poverty, unemployment and inequalities of distribution of income. Distribution of income की बात की गई है तो it will be economic development. Two important aspects of our lives other than income are equal treatment and freedom. Equal treatment and freedom. Then wheat, rice, no, dash ensures availability of essential commodities like wheat, rice, sugar, etc. 9th class में किया है आपने PDS, that is public distribution system. Question number 290. Economic development is wider term as compared to human development. That is false, क्योंकि human development is a wider term as compared to economic development. Economic development is only an aspect of human development जो कि ज़रूरी है overall human development के लिए. According to recent World Development Report, countries which had per capita income of $12,236 per annum are rich countries. According to recent World Development Report, countries which had per capita income of $12,236 per annum are rich countries. True. Kerala has low infant mortality rate. Yes, that means number of children, the infants, the number of birth and the number of children dying out of that birth, that is known as infant mortality. So infant mortality rate is low in case of Kerala. If it is low, it is positive. अगर ज़्यादा है तो it is negative. Vice versa.
Then a decent standard of living is a variable of human development index. A decent standard of living, yes, it is true. If BMI is less than 18.5, हमने किया था ना बुक में जब हमने चैप्टर किया था, 18.5 है तो अप्रोप्रिएट है, अगर इससे ज़्यादा है तो ओबेस्टिक है, अगर इससे कम है तो अंडर नरिश्ड है. सो इट इज अंडर नरिश्ड. लेस देन पूछा है, ग्रेटर देन होता तो ओबेस्टिक होता, इक्वल टू होता तो वेल नरिश्ड, देन अप्रोप्रिएट है. ओके, देन what proportion of country is overusing their groundwater resources? It is 1/3. 1/3 of the country is overusing its groundwater resources. 296. Resources which will get exhausted after years of use, they are non-renewable resources. लेकिन non-renewable इन्हें क्यों बोलते हैं? Because they will be taking million of years to be formed again. That is why non-renewable. The two developmental goals of landless rural laborers are, क्या हो सकता है? Landless rural laborers, more days of work and better wages. Clear? The level of efficiency and productivity is low in developing country. Yes. Longevity implies how long a newborn is expected to live. That is true. The last question, the Human Development Index, that is HDI rank of India as per 2016 के हिसाब से 151 है. No, that is false. It is 131. So with this question we have come to an end of series 3 of MCQs, and now we will meet in series 4 part 1. God bless you all.